So in last class we have discussed up to effect of pressure on melting point and boiling point, and we discussed that with the increasing pressure melting point will increase and melting point will decrease and boiling point will increase. So we have one example of this one, melting point decrease with the increasing pressure. This is process of regulation process, regulation process. What happen in this process? Let we have a ice slab. We have one ice slab. This is the ice slab. Okay. And weight of this ice slab, that is, let something. This ice slab is fixed on a stand like this. And in an environment of 0 degrees Celsius. In an environment of 0 degree Celsius. Temperature surrounding का भी किसके आसपास क्या है? 0 degree Celsius है. Now we placed a weight on this surface with the help of a thread. With the help of a thread like this one, W. What happened when this thread placed on this ice slab in such a way? We observed that thread slowly move inner to slab. That means place at which that thread touch, that will apply pressure on that particular point. That will apply pressure on that particular contact point. So at that particular point, contact point, pressure is applied. Due to application of the pressure, molecule of the ice that will melt down. That will melt down. So here temperature is less than 0 degree and ice start melting. How it is possible? This is due to pressure. Due to pressure. So when you observe, slowly this thread move inside the slab. And finally when this thread comes out from the slab will not break. Slab will not break. Why? Because when this thread move inner to this slab, at that time when it's move inside, pressure from above surface, above the thread, pressure from above surface of the thread, that will decrease again. जब थ्रेड अंदर आ गया, इनर की ओर मूव कर दिया, तो ऊपर के पार्टिकल का प्रेशर क्या हो गया? रिमूव हो गया. And due to removal of the process, that particular particle will refreeze. So when this thread moves inner to the glass slab, upper particle of the thread will be refreeze again, and then this thread finally come out from the slab and slab will not break down. This complete phenomena, this complete process is known as process of regulation. क्या बोलते हैं इसको? Process of regulation. Got my point? समझ में आ गई चीज? या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है. नेक्स्ट अपने पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. What is Newton law of cooling? You know what is the Newton's law of cooling? What this law say? According to Newton's law of cooling, cooling rate of any object directly proportional to temperature difference of temperature of substance and temperature of surroundings. So according to this law, dq upon dt directly proportional to T minus T naught, and we will apply negative sign. Why negative sign? Cooling rate, that means temperature decrease. Cooling rate will also decrease. So here T is temperature of substance. Temperature of
substance. And what is T naught, Randir? Randir, temperature of surrounding. Got my point, everyone? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? So now here we have dq upon dt equal to kt minus t naught. kt minus t naught. You know what is the dq? dq equal to what? dq equal to ms dt. In last class we have discussed about this one. What is the s here? Specific heat constant. So here we can write minus ms dt upon dt equal to k t minus t naught. Up to here any problem? No? So now here we have dt upon dt equal to minus k upon ms t minus t naught. K upon ms. Can we define this is a new constant? Because mass is constant, k is constant, m and s is also constant. So it is a new constant. Let k, capital K. So can I write dt upon t minus t naught equal to k t minus t naught. ठीक है, इसको कैपिटल के ले लिया, ये स्मॉल के था, इसको क्या ले लिया मैंने? कैपिटल के ले लिया. Now tell me, sorry, it is not t minus t naught, it is just dt, just dt. Now tell me, integration of both side integration t minus t naught equal to k dt, k dt. Now what happen? dt upon t, 1 up dx upon x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx upon x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x होता नहीं था बेटा? dx upon x का इंटीग्रेशन होता है ln x. तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? यहां पे ये ln t माइनस टी नॉट तो कांस्टेंट है, वैल्यू क्या कर रहा है? जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सिस्टम है, सॉरी, इक्वल टू के डी टी का टी क्या होगा? टी प्लस साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है सी. अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी लॉ की कि ln a इक्वल टू बी है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर b, क्योंकि नेचुरल लॉग की बेस कितना होता है? e होता है. कितना होता है बेस? एक लॉ की प्रॉपर्टी मैंने लिखा ही तुम्हें पहले भी, अगर ये वाली याद नहीं है तो ये वाली लिखी होगी हमने पक्का, कि log ऑफ a ऑफ b इक्वल टू एक्स देन b इक्वल टू a टू द पावर x. जो बेस होता है उसकी पावर में चला जाती है वैल्यू, ये वाली. ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना इसका? e है. कितना है? e. तो हम लोग इसको लिखते हैं t माइनस टी नॉट इक्वल टू e की पावर, ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस था ना सबके साथ, ये माइनस, e की पावर माइनस के टी प्लस सी. तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? टी नॉट, इसको ऐसे लिखते हैं क्या? प्लस e की पावर माइनस के टी इंटू ई की पावर सी. बेस सेम, वापस पावर ऐड हो जाएगी. ई की पावर सी भी क्या है? एक नया कांस्टेंट है. क्या है? कि नया कांस्टेंट है, तो इसको सी लिख सकते हो. ई की पावर सी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग? सी. तो टी इक्वल टू टी नॉट प्लस सी ई की पावर माइनस के टी. दिस इज द कूलिंग इक्वेशन. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इक्वेशन. समझ में आ गई बात या कोई समस्या है? नहीं है? तो दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. दैट इज रिमेनिंग टॉपिक. दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? वन मोर थिंग, जूल वाटर इक्विवेलेंट. जूल वाटर इक्विवेलेंट या वाटर इक्विवेलेंट, वाटर equivalent. So what is the water equivalent? What is the water equivalent? क्या होता है water equivalent के बारे में सुना है? जूल water equivalent. So heat, amount of
heat that raise the temperature of the given substance, temperature of the any other given substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius. Let 1 kg of substance is heated by given heat by 1 degree Celsius. Then that heat can heat some amount of the water. That amount may be less than or may be greater than the given substance. So amount of the water, sorry, amount of the water that temperature can be raised by 1 degree Celsius. Amount of the water that temperature can be raised by 1 degree Celsius by the heat which is used to increase the temperature of 1 degree Celsius of 1 kg of given substance. अपन कोई एक दूसरा सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 kg का कितने से बढ़ाएंगे? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे. जितनी हीट हमने उस सब्सटेंस को दी, उतनी की उतनी हीट किसको दे रहे हैं हम लोग? वाटर को दे रहे हैं. तो वाटर का कितना मास 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता है? वो हो सकता है उसका 1 kg का मास, वाटर के 2 kg को क्या कर दें? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, तो उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2. अगर उसका 1 kg का मास वाटर के 0.5 kg को इंक्रीज करता है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0.5. कितना हो जाएगा? 0.5. दैट मीन्स amount of heat which raise temperature of given substance of 1 kg by 1 degree Celsius, then water equivalent is mass of water which temperature is increased by 1 degree Celsius by given same amount of heat. So what is the unit of water equivalent? That is kg. Unit क्या होगी? Kg. Got my point? Now this is the last topic of this chapter, and this is all about this chapter. Okay. Next chapter we will start, that is thermodynamics. See you in next class.